मैडम को लग गई है। ये देखो मैं क्या ढूंढ कर लाई हूँ। जुगाड़। अब मुझे लग रहा है हाय बोलना महंगा पड़ गया। ठंडी है ना एक तो बहुत। छोटे बच्चों की तरह लगी मेरे को। इधर आते आते गिर गई। ठंडी है ना, थोड़ी सी चोट भी बहुत ये तो So the day 3 begins, and the mountains still whisper stories of yesterday, of Tunganath, of the climb, of the silence we left our breath in. We spent the night under a million stars at the campsite and woke up to the chill only the Garhwal can gift. Now our journey leads us forward to Deoriatal. It's not just a lake, but it is known as a mirror of gods. Day 3. अच्छा डे 3 yes. We are going to Deoriatal. Yes, देवरियाताल। बहुत डिफिकल्ट होने वाला है वैसे तो। कल से थोड़ा सा इजी, बट हाँ क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अदरवाइज फिंगर्स क्रॉस्ड। This trail feels like walking through a forgotten dream. Every turn holds the hush of pine forests, the rustle of leaves telling tales older than memory. And then, after the steps, after the silence, after the surrender, Devprayag, calm, still, eternal. It sits like a jewel in the lap of Himalayas, reflecting the mighty Chopta peak like a secret only the sky knows. They say the Pandavas once walked here, that this was a land of questions and truths. Do you remember that story where Yudhishthir answered Yama and earned his brothers back? This is the exact same land where I'm standing right now. As I stand here, I don't feel like a traveler. I feel like a tiny breath in a vast, sacred rhythm. This is not just a trek, it's a return to silence, to stillness, to something far older than time. This is Deoriatal, and I will carry its reflection forever. Hello.
Somewhere along the trail, nature leaves gifts. And the one that I found is called Hisalu. Along the trails, you'll also find this wild bush. The fruit, the yellow berry that you see is called Hisalu, a sweet, tangy berry that every Pahari kid has grown up loving. No packet, no price, just pure joy plucked straight from the wild. In these tiny fruits lives the real flavor of the Himalayas. And then the ancient stone path brings us to a Mahadev temple. Quiet, untouched, sacred. Locals say Lord Shiva still walks these forests, watching, blessing, and in that stillness, you feel it. You feel him. हरिओम। ये भगवान देखो, ये स्वयं ओंकार हैं। देवदास जो भगवान जी हैं वो स्वयं ओंकार हैं। भगवान शिव नारायण शंभु, हरे हरे शंभु, ऐसा रूप है ये पूरे जल के रूप हैं। अनंत गहरे गंगा। ये भगवान नारायण जी हैं। पांचवें वाले सत्यनारायण भगवान। ये वासुकी शंकर जी हैं। ये भगवान चंद्रमौली, भगवान तुंगनाथ शंभु, वही भूतनाथ तुंगनाथ चंद्रशेखर हैं। और ये भगवान सूर्य नारायण हैं। और ये सूर्य नारायण भगवान एक मुख ओंकार भगवान जी का सबसे बड़ा रूप है। इधर देखो। और इसमें अगर भगवान की कृपा होती है, इस जलधारा को देखो। ये जलधारा अपने आप ही चल के दर्शन दे देते हैं भगवान जी। समझ गए प्रभु? ओंकार ओंकाराय नमः। दर्शन देने होगा बाबा का। ये जलधारा अपने आप ही चलती है और स्वयं जो है वो नाव बन के चलना शुरू कर देते हैं भगवान जी। दिख रहे हैं जी? देखो उनको जी। अभी तीनों प्रकट ब्रह्मा विष्णु महेश है वो। अब दो मुख हो गए और एक है भगवान के। दिख रहे हैं ना? तो नाग बन के चलते हैं क्योंकि वो नाग का ही नागराज जो है ओंकार है। ठीक है ना? अब देख रहे हैं। अब देखो उनको ओम मन के चलते हैं। वो साक्षात ओम बनता है उसमें। ये स्वयं वो दर्शन देते हैं साक्षात। दिख रहे हैं? दिख रहा है? ये दूध दिख रहा है नीचे जी जी। हाँ, दूध पानी अलग हो जाता है। ये ऐसा पानी अलग दिख रहा है। इस पानी को दिख रहे हैं? कोई दूध नहीं होता इसमें। ऐसा साक्षात एक धाम है ये भगवान का। ठीक है, बता देना दिल्ली वालों को। ऐसे मत आना, मैं चाय पी लो वापस। भगवान को प्रणाम करके आना जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। As I descend from Devriatal, it feels like I'm walking away from a dream I never wanted to wake up from. Every step down is like gently closing a chapter, one written in still waters, pine-scented winds, and snow-kissed peaks. The lake stays behind, quiet, motionless, like it was never meant to be disturbed, like it existed only for those who truly looked, not with their eyes, but with their heart. I carry no souvenirs, only memories of the trail, the temple, the stories whispered by the forest, and that reflection of the mountain in the lake. Maybe it wasn't just Chokamba I saw. Maybe it was me, calmer, clearer, a little more alive. And I'm sure this isn't the end of the trek. This cannot be the end. Just a quiet beginning to something even deeper. And if you are still watching this, I want to thank you for walking this trail with me. Tunganath wasn't just a destination. It was an experience I'll never forget. And I hope through this vlog I was able to take you along to help you feel the same peace and magic that I did. If you ever get a chance, come here, breathe in the silence, touch the clouds, and let the mountains speak to you the way they spoke to me today. Don't forget to like, share, and subscribe because there's so much more adventure ahead, and I would love to have you with me on every step. So until we meet again, for the one last time, Har Har Mahadev.